All right, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all doing well. So in this session, we are going to do the difficult questions from this paper, May, June 2022, paper 2, variant 2. So I have these 4 questions that I want to do. Question number 4, 6, 11, and 12. Okay, 4, 6, 11, and 12. These are the 4 papers that I'm going to be doing in this session. You can also find a lot of other helpful content in the description below. For example, you can find difficult questions from November 2022 papers for AdMaths. And also you can find class recording for the whole syllabus, playlist on that as well. Along with that, you'll find some quick revision videos that a lot of students find extremely helpful before their exams. You can also have a look at that. The links to all of those playlists are in the description below. Okay, so in this particular session, I'm going to be doing these 4 questions from the May, June 2022, paper 2, variant 2. So let's start with this. Let's start with this one first of all. This is question number 4 from this paper. Let's have a look at this. It says variables x and y are related by this equation, y equals 1 plus 2 over x plus 1 over x squared, where x is greater than 0. We need to use differentiation to find the approximate change in x when y increases from 4 by the small amount 0.01. Okay, so how do we approach such problems? The first thing we have to do here is we have to find the derivative, right? That's how we start. सबसे पहले हमें derivative find करना है इस function का. So how do we do that? dy over dx. What's the derivative of 1? That's a 0. 2 over x का डेरिवेटिव क्या होएगा? रिमेंबर यहाँ पे अगर हम x को ऊपर लेके आते हैं, it would be x raised to power -1. इस पे पावर रूल नहीं अप्लाई हो सकता. In fact, power rule हो सकता है. We are differentiating. I'm sorry about that. Let's first write this function in power form. पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको differentiate करते हैं. Let's write it like this first of all. So 1 plus 2x raised to power -1 plus x raised to power -2. Let's write it in this form first of all. हम differentiate करें तो डेरिवेटिव हम इस तरह कर सकते हैं. 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा. 2x raised to power -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 remains as it is. You multiply by the power and then you subtract 1 from the power. It becomes x raised to power -2. And then what about the derivative of x raised to power -2? -2 बाहर multiply होएगा और x की power में से 1 minus हो जाएगा. This is the derivative that we have. We can simplify this and it's going to become -2 over x squared minus 2 over x cube. This is dy over dx. That is what we needed to find first of all. जब हमारे पास डेरिवेटिव आ गया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस डेरिवेटिव के अंदर उसने कहा है कि y increases from 4 by this small amount. तो उसने change in y दिया हुआ है हमें और change in x हमें निकालना है. Okay, so what we need to find is the approximate change in x when y increases from 4 by the small amount 0.01. तो हमें y की कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है इसके अंदर? हमें इनपुट करनी है y की वैल्यू यहाँ पे which is 4. Now the problem is we don't have a y here in our derivative. That's a problem, right? उसने हमें y की वैल्यू दी हुई है starting value 4. So the first thing we need to do now is before we can input something here, we need to find out कि 4 के corresponding इसके अंदर x की वैल्यू क्या आती है. तो हमें वो figure out करना पड़ेगा पहले. इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं. अगर आपने ऑलरेडी ये कर लिया हुआ है तो दैट्स ओके, आप उसके बाद ये कर लें. उसने y की वैल्यू 4 दी हुई है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या आती है. Let's input that here in this equation. Let's see what that gives us. 4 equals 1 plus 2 over x plus 1 over x squared. We can multiply the whole equation by x squared to get rid of the fraction. And that is going to give us 4x squared. On the right side, we would have x squared and then 2x plus 1. Right? X squared से पूरी equation को मैंने multiply कर दिया. तो ये मेरे पास आ गया, fraction खत्म हो गई. Now this is the quadratic equation that we can solve. We have 3x squared minus 2x minus 1 equal to 0. Can we factorize this? -3, we
we could have that. We could say this is 3x squared plus x minus 3x minus 1 equals 0. What do we get from that? We can take x common, and that leaves us with 3x plus 1 inside, minus 1 from here, and that leaves us with 3x plus 1 here as well. And we get two factors from this, which are x minus 1 and 3x plus 1. So this is equal to 0. That means x is either equal to 1 or x is equal to minus 1 over 3. So these are the two possible values of x that we get from this, जो हम डेरिवेटिव के अंदर इनपुट कर सकते हैं. लेकिन क्या ये दोनों पॉसिबल हैं? दोनों इनपुट करके तो हमारे पास मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स आ जाएंगे. तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. इट सेज x is greater than 0. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू नहीं पॉसिबल. x equals 1 जो है ये हम इनपुट कर रहे होंगे इस डेरिवेटिव के अंदर, राइट. तो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया था पहले. इसके अंदर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 डाल देते हैं और हम देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है. इससे हमें मिलता है इस पॉइंट के ऊपर डेल्टा y ओवर डेल्टा x, विच इज -2 ओवर 1 squared minus 2 over 1 cube, which turns out to be -4. So delta y over delta x is -4. So small change in y over small change in x is equal to -4. At this point, x equals 1. All right. अब हमें क्या करना है? हमें उसने बताया है कि y चेंज होता है बाय स्मॉल अमाउंट 0.01. तो उससे x पे क्या चेंज आती है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट्स इनपुट डेल्टा y इक्वल टू 0.01. डेल्टा y की जगह पे 0.01 डाल देंगे. उससे क्या मिलेगा हमें, 0.01 over delta x equals -4. And then delta x is going to be equal to 0.01 divided by -4. And that gives us some value that we can use our calculator for. Let me do that. 0.01 divided by 4. And that's giving me 1 over 400. आप 1 over 400 लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और decimals में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं. That's also okay. Okay, so this is -1 over 400. That is what we were looking for. This is the change in x that we get when y changes by a small amount, 0.01. That's what we wanted to find out here. Okay, that's question number 4. The next one that I want to do from this paper is question number 6. Let's have a look at this. In part A, it says, in this question, I is a unit vector, due east, and j is a unit vector, due north. A cyclist rides at a speed of 4 meters per second on a bearing of 15 degrees. We need to write the velocity vector of the cyclist in the form xi plus yj, where x and y are constants. Now, how do we think about this? Let's try and think about this. First of all, we have bearing of 15. तो इसे अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली तो ये कैसा आएगा? इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस. रिमेंबर, दिस इज योर नॉर्थ. इस तरह से एक वर्टिकल लाइन. बेयरिंग उसने दी हुई है 15 डिग्रीज की, ठीक है. तो इसका मतलब यह क्या है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. यू मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, सच दैट दिस एंगल हियर इज 15 डिग्रीज. दैट्स द एंगल दैट वी हैव. और स्पीड क्या है? 4 मीटर्स पर सेकेंड. तो इस वेक्टर का जो ये इंक्लाइंड वेक्टर है 15 डिग्रीज के एंगल के ऊपर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? दिस इज 4 meters per second. आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है. वेक्टर किस फॉर्म में लिखना है? एक्स और आई की फॉर्म में. तो आपको इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं. एसेंशली आपको एक ये कंपोनेंट चाहिए और दूसरा ये कंपोनेंट चाहिए, ठीक है. और आप इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं. यू नीड दिस कंपोनेंट, लेट्स कॉल दिस द वाई कंपोनेंट. अपवर्ड्स डायरेक्शन में कितना जाने और फिर हॉरिजॉन्टल कितना जाने, ये दो कंपोनेंट्स आपको चाहिए. हाउ कैन वी फिगर देम आउट? वी कैन यूज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. 15 के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. ऑपोजिट इज एक्स,
and 4 is hypotenuse. So we can say opposite over hypotenuse, that equals sine, right? So x over 4 is equal to sine of 15. And similarly, y is adjacent 15 degrees के हिसाब से, sorry about that, 15 degrees के हिसाब से y is adjacent, right? तो उस पे आप cos यूज कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, y over 4 is equal to cos of 15. तो यहां से क्या हुआ, आपके पास x और y कंपोनेंट्स आ जाएंगे velocity vector के. Let's find x and y from this and see what that turns out to be. Now remember, यहाँ पे 15 degrees angle है, तो उसने exact तो नहीं मांगा, उसने यहाँ पे exact तो नहीं कहा. अगर आप इसको decimals में लिखना चाहें, that's perfectly okay as well. अगर आप एग्जैक्ट फॉर्म में, अगर आप डेसिमल्स में लिखना चाहें वो भी सही है, इसको एग्जैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, और 15 डिग्रीज हम एग्जैक्ट में लिख नहीं सकते इसका साइन और कॉस, राइट? तो या तो आप ऐसे ही रहने दें, ऐसे कैसे रहने दे सकते हैं, वी कैन से x इक्वल्स 4 sin 15 from this and y equals 4 cos 15. तो अगर आप ये वेलोसिटी वेक्टर कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखते तो वो कैसा होता, x component is 4 sin 15, राइट साइड पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, एंड द y component is 4 cos 15, वर्टिकल जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है. ये आपका वेक्टर होता है. उसने i और j फॉर्म में कहा हुआ है, तो उस फॉर्म में क्या होएगा, ये आप लिखोगे 4 sin 15 degrees whole multiplied by i plus 4 cos 15 degrees whole multiplied by j. And that is your velocity vector. That is what we were looking for here. ठीक है? अच्छा, that was part A. Let's have a look at the next one now. In part B, it says a vector of magnitude 6 on a bearing of 300 degrees is added to a vector of magnitude 2 on a bearing of 230 degrees to give a vector v. Find the magnitude and bearing of v. Okay, now how do we think about this? So a vector of magnitude 6 on a bearing of 300 degrees. Now let me just, so इसके लिए diagram बनाना जो है वो काफी जरूरी है, otherwise आपको समझ नहीं आएगा सही तरह से. Let's represent north here somewhere. So this is your north, let's say. 300 degrees की bearing देखें, 90, 180, 270, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा आपको. This is going to be the direction roughly. For the first vector, जिसका magnitude कितना है, 6 Newton, 6 जो भी आपका unit है उसका. Such that this angle here is 60 degrees और बाहर वाला angle कितना है, 300 degrees. एक तो ये first vector हो गया. दूसरा vector क्या है, magnitude 2 and bearing is 230 degrees. Okay. Let's represent that other vector on a side as well. So ये north of बेशक आप हटा दें. This is the direction of the first vector. दूसरा भी हम यहाँ पर represent कर लेते हैं. Let's say this is north. इसकी bearing क्या है, 230 degrees. तो इसका क्या मतलब है, 90, 180, and then 50 more. And this direction is going to be roughly like this. ये आपकी डायरेक्शन हो सकती है दूसरे वेक्टर की. इसका मैग्नीट्यूड कम है 2. नाउ दिस एंगल इज 230 डिग्रीज. का मतलब क्या है, अगर हम ये वर्टिकल लाइन इस तरह से बनाते हैं तो ये एंगल कितना बनता है, 50 डिग्रीज, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बनेगा, फिर 40 बनेगा. ये आपके दो वेक्टर्स हैं, इनको आपने ऐड करना है और आपने देखना है जो रिजल्ट आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी बियरिंग क्या है. अब इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. एक तरीका ये हो सकता है, इसका हमने ऊपर ये x और y कंपोनेंट्स निकाले हैं ना, आप इन दोनों वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स निकाल के उनको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर लें और फिर जो रिजल्ट आए उसका मैग्नीट्यूड और बेयरिंग निकाल लें. दैट्स वन पॉसिबिलिटी. एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम पूरे को एक डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर लें. दैट्स गोइंग टू मेक इट मच क्विकर.
रिमेंबर वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, यू कैन यूज द हेड टू टेल रूल, राइट? दो वेक्टर्स ले, पहले का हेड, लेट्स से ये इसका हेड है, और दूसरे का टेल, इनको ज्वाइन कर दें। तो हम इनको ज्वाइन कैसा करेंगे, हम इनको अगर ज्वाइन करना चाहें तो एक हमारा फर्स्ट वेक्टर है, अब देखिए मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट वेक्टर के बारे में मुझे क्या पता है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है, और इसका एंगल जो यहाँ पे ऊपर बन रहा था दैट वाज 60 डिग्रीज, ये मुझे पता है, ऊपर वाला एंगल 60 है, बाकी मैं इसको फिर फिगर आउट कर लूंगा, जो मुझे रिप्रेजेंट करना, दिस एंगल इज 60। अब इसके बाद आप दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दें इस पॉइंट से, जहां से पहला वेक्टर खत्म हुआ, उसके आगे से आप दूसरा वेक्टर शुरू कर दें। वो क्या आएगा, वो आपके पास ऐसे आ जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर रफली। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट्स। और इसके लिए हमें ये वाला एंगल पता है, उसने कहा ये एंगल जो है दिस इज 50 डिग्रीज, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, उसने कहा ये ऐड हो रहे हैं वेक्टर्स, वेक्टर्स ऐड होते हैं तो क्या होता है, आप लेट्स से इनको किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट्स से जो फर्स्ट पॉइंट था दैट वाज ए, एंड देन दैट वाज बी, एंड देन दिस इज सी। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर दैट इज द सेम एज द वेक्टर ए सी। तो आप ए से सी पर इस तरह से डायरेक्टली चले जाएं, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बेयरिंग निकालना है आपको, एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बेयरिंग जो है ये हमें चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी डू दिस, लेट्स फिगर दिस आउट नाउ। अब इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या हम फिगर आउट कर सकते हैं किसी तरह से? Let me think about it. We have this angle that is 50, and yeah, so if this angle is 60, what about this angle here? Alternate angles, right? ये भी वर्टिकल लाइन है और ये भी वर्टिकल लाइन है, तो अगर ये राइट वाला एंगल नीचे वाला 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बी वाला एंगल पता चल गया हमें। अगर बी पे एंगल पता चल गया तो वी हैव अ ट्राइंगल इन विच वी नो टू साइड्स एंड वी नो द एंगल बिटवीन देम। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोसाइन रूल यूज करके हम फिगर आउट कर सकते हैं कि बाकी जो एक साइड रह गई है वो क्या है, और एंगल जो है आपका ये इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल फिगर आउट करना, तो वो भी फिगर आउट कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन फाइंड एनीथिंग दैट वी वांट फ्रॉम दिस ट्रायंगल, लेट्स डू दैट। कोसाइन रूल अगर इस पे अप्लाई करें, रिमेंबर व्हाट द कोसाइन रूल वाज, साइड पर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर्ड इक्वल्स बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस 2bc cos ऑफ a। रिमेंबर जो साइड आपके पास लेफ्ट साइड पर आ रही होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, उसके ऑपोजिट जो एंगल है आपके पास राइट साइड पर आ रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करते हैं आप, आपको ए सी की लेंथ चाहिए सबसे पहले, राइट? जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी आपको लेंथ चाहिए, दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। ए सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू the other two sides, their squares added, so that's 6 squared plus 2 squared minus 2 into 6 into 2 into cos of the angle 50 plus 60 कितना होता है 110, so we have cos of 110 here। यहाँ से क्या होएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी। Let's see what this turns out to be, 36 plus 4 minus 2 into 2 into 6 into cos of 110 degrees। अगर आपका एंगल यूनिट पहले रेडियंस में था किसी वजह से, तो डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें उसको। cos of 110 that's giving me 48, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.943। इसने एग्जैक्ट तो नहीं कहा हुआ ना यहाँ पे, या एग्जैक्ट नहीं कहा हुआ, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट वी वर लुकिंग फॉर। अब एंगल चाहिए, लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, ठीक है। अब ये थीटा अगर मैं फिगर आउट करना हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज साइन रूल नाउ, राइट? अब कोसाइन रूल यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें एक साइड पता चल गया है। अब हम साइन रूल यूज कर लेते हैं, हम एक यूज करते हैं साइन थीटा, जो एंगल हमें फाइंड करना है इसकी ऑपोजिट साइड क्या है 2, साइन थीटा ओवर 2 दैट इक्वल्स
ये एंगल पता है हमें, that's sine of 110 divided by the side opposite to that, we just found that, that's 6.943. ठीक है, इससे आपके पास क्या आएगा, थीटा आ जाएगा. Let's figure this out. 2 into sine of 110 divided by 6.943, that is giving me 0.27069. The value of theta from here turns out to be 15.7 degrees. ये मेरे पास थीटा आ गया. अब मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख सकता हूँ. हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? ये मेरे पास नॉर्थ था, ठीक है, रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन, और ये एंगल मेरे पास क्या आ गया है, ये पूरा एंगल 60 प्लस थीटा, राइट. तो ये पूरा एंगल जो बनेगा रिजल्टेंट का, इसके मैग्नीट्यूड तो आ रहे हैं 6.943, एंगल कितना बन जाएगा, 60 प्लस थीटा, दैट्स 75.7. 60 plus 15.7, that's where this is coming from. 60 degrees plus 15.7 degrees. ये मेरे पास ये एंगल आ गया. What about the bearing now? Bearing आपको लिखनी है, जो आपका रिजल्ट आता है फाइनल. Let me write that here now. Resultant is 6.943 at a bearing of, remember bearing कैसे करते हैं, नॉर्थ से हमेशा clockwise. What is this going to be? 360 minus 75.7, what's that? That is going to be 284.3 degrees. Okay, so that's what you write here. So you say this is 6.943 at a bearing of 284.3 degrees. ठीक है, and that is what we were looking for. In this case, आपने दोनों वेक्टर्स को ऐड करके बताना था उनका मैग्नीट्यूड क्या आता है और उनकी बियरिंग क्या आती है. ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते थे, आप दोनों वेक्टर्स भी निकाल सकते थे, आप दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालते हैं, उनको वेक्टर फॉर्म में ऐड करते, फिर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेते. That could have been another possibility as well, वो भी कर सकते थे. ठीक है, I hope that makes sense. Let's move on to the next one. The next question that I want to do from this paper is question number 11. Let's have a look at this now. This is a 9-mark question. Let's see what we can do here. The diagram shows part of the line y equals 1. Okay, that's here. And one complete period of the curve y equals 1 plus cos x. Complete period का क्या मतलब है? Complete period होता है 2 pi में, right? That means ये point जो है, this is 2 pi, और middle में यहाँ पे pi आ रहा होगा. ठीक है, अच्छा. What else do we know? X is in radians. Okay, yeah. So radians में तो इसलिए हम pi और 2 pi लिखेंगे यहाँ पे. PQ is tangent to the curve at the PQ is tangent to the curve at the points P and Q. Okay, so ये PQ line जो है, that is tangent to this curve, यानी कि ये एक horizontal line है. तो इस curve के जो gradient है उन दोनों points के ऊपर वो 0 है. वो आपको नजर आ रहा है diagram पे भी. ठीक है, cos का ग्राफ वहाँ पे end हो रहा है, तो it's clear कि वो maximum points हैं. QR is parallel to y-axis. QR. Okay, so this line is a line that's parallel to y-axis. You can see it in the diagram as well. And the area A is enclosed by the line y equals 1 in the curve, where B is enclosed by the line y equals 1, and that and the line PQ and the curve. Okay. Given that area A over area B, so area A और area के B की रेशियो दी हुई है, इसका मतलब क्या है, area A over area B, इसने कहा that is equal to 1 over K, right? इसको अगर आप रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, this is what it becomes. We need to find the exact value of
K. All right. Now, how do we think about this? That's question number 11 from this paper. Let's change my network ports. Is this working now? अच्छा, so we need to find area A and area B. जब वो दोनों आ जाएंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी, right? लेकिन आपने एक चीज देखनी है कि आपने exact value निकालनी है K की, so you can't have decimals here. You need everything in exact form. Area A कैसे आएगा, area B कैसे आएगा? That's what we need to figure out somehow. अच्छा, area A हम कैसे describe कर सकते हैं? Area A कैसे describe कर सकते हैं? एरिया ए हमारे पास कैसे आ सकता है? दिस इज दिस एरिया. अगर हम ये रेक्टेंगल बना लें इस तरह से, ये पूरा एरिया, इसमें से अगर हम माइनस कर दें वो वाला एरिया जो कर्व के नीचे है, कर्व के नीचे वाला पार्ट माइनस कर दें इसमें से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर हम ये माइनस कर दें इसमें से, तो इससे हमें मिल जाएगा एरिया ए. ओके, does everyone get this? So area A is area under the line y equals 1, subtract from that area under the curve. अब ये पॉइंट कर्व की लिमिट्स क्या होंगी? अभी देखें, ये 1 प्लस cos x कर्व है ना, तो उसकी बेस लाइन किधर है? बेस लाइन 1 पे चले गई है, तो बेसिकली दिस इज द बेस लाइन. ये आपका पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कर्वेचर देखें, पहले इस तरह से एक डायरेक्शन, फिर दूसरी डायरेक्शन हो रही है. ये पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पे? दिस इज गोइंग टू बी π/2. इस तरह से राइट साइड पे ये हो जाएगा 3π/2. जहाँ ये पहले 0 थे ना ओरिजिनली, कॉस की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये 1 पे चला गया वर्टिकली. दिस इज अ हाइट ऑफ 1. सो आपके पास ये लिमिट्स इसकी हैं π/2 से लेकर 3π/2 तक, अगर आपने कर्व की लिमिट्स यूज करनी है. तो हम पहले एरिया ए फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, एरिया ए, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड हाउ दैट कैन बी कैलकुलेटेड. एरिया ए इज इक्वल टू the rectangle minus the area under the curve from π/2 to 3π/2. वो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले. सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेक्टेंगल की एरिया निकाल लेते हैं. रेक्टेंगल कौन सा एरिया? ये रेक्टेंगल. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर राइट नाउ. इसकी बेस कितनी है? π/2 से लेकर 3π/2 तक, दैट्स पाई into height is 1. रेक्टेंगल के एरिया मेरे पास आ गया पाई. ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है? कर्व के नीचे एरिया करता है, वो दूसरी चीज चाहिए. एरिया अंडर कर्व, कहां से कहां तक? π/2 से लेकर 3π/2 तक. वी फिगर्ड आउट द लिमिट्स ऑलरेडी हियर. π/2 से 3π/2 तक हमारे पास लिमिट्स आएंगी. इस कर्व के नीचे वाले एरिया, इससे क्या आएगा? ये जो साइड्स वाले रीजन है ये आ जाएंगे. वो हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो एरिया ए आ जाएगा. सो दैट्स व्हाट यू वांट टू डू हियर. ओके, अब एरिया अंडर कर्व कैसे आएगा? कर्व का फंक्शन हमें पता है, उसने दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस cos x, राइट? दैट्स द कर्व 1 प्लस cos x. वो फिगर आउट कर लेते हैं. क्या होएगा? इंटीग्रल with limits π/2 to 3π/2 of the function 1 plus cos of x. इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये लिमिट्स इनपुट कर देंगे. नाउ व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 1? 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज जस्ट x. cos का इंटीग्रल क्या होता है? sin, so that becomes sin x. All we have to do now is input these limits from π/2 to 3π/2. All right, let's input the limits. पहले 3π/2 डाल दें. 3π/2 plus sine of 3π/2
subtract from this pi over 2 and sine of pi over 2. Remember, you need an exact answer at the end. आपने working सारी show करनी है. That's really important. लिमिट्स इनपुट करनी है, वर्किंग दिखानी है. साइन ऑफ 3 पाई ओवर 2 क्या होता है, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं. दैट्स परफेक्टली ओके. मेक श्योर कैलकुलेटर इज इन ग्रेडियंट मोड और आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो एग्जैक्ट फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए कैलकुलेटर से. 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 का साइन जो है दैट इज -1. माइनस पाई ओवर 2 minus into minus becomes plus sine of pi over 2. Sine pi over 2 होता है 1. What do we get from this? 1 and -1 get cancelled. 3 pi over 2 minus pi over 2. That is giving me, okay, there's something wrong here. 3 pi over 2. Okay, no, that's okay. 3 pi over 2. 3 pi में से minus pi करेंगे और ये -1 है +1 है. There's something. Okay, yeah. So मैंने प्लस माइनस गलत कर दिया यहाँ पे. This is pi over 2 x plus sin x था ना, तो यहाँ पे होना चाहिए प्लस, तो ये -1 होना चाहिए. Okay, so that's okay, right? इससे क्या मिलता है मुझे? इससे मुझे मिलता है 3 pi over 2 minus pi over 2. That's pi. Yeah, so that's okay. -1, that is -2. So this is the area under the curve pi -2. All right, ये curve के नीचे वाला area आ गया. So we have the area of the rectangle, we have the area under the curve. तो एरिया ए कितना हो गया फिर? कर्व के नीचे वाले एरिया माइनस कर दें रेक्टेंगल में से, तो एरिया ए क्या आ जाएगा? एरिया ए इज पाई माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2. ये आपका आ गया एरिया ए. एक आपको ये चीज चाहिए थी. वालेकुम अस्सलाम उस्मान. सो वी फाउंड द एरिया ए, राइट? एक चीज आ गई. अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है? एरिया बी निकालना है. जब एरिया बी भी आ जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी, राइट? लेट्स थिंक अबाउट एरिया बी नाउ. एरिया बी. नाउ वी कैन यूज एग्जैक्टली द सेम लॉजिक फॉर दैट एज वेल. एरिया बी के लिए भी हम वही लॉजिक यूज कर सकते हैं. और कैन वी थिंक अबाउट इट. इसमें हम अगर ये करें, इनफैक्ट बी निकालने के बजाय ना ये आसान होएगा अगर हम इसकी जगह पे ना ये पूरा कर लें. या सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड दिस कंप्लीट एरिया इंस्टेड. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल लेता हूँ a plus b, all of this, that's going to be easier to calculate, right? और फिर मुझे a तो पता है, a माइनस कर दूंगा इसमें से तो b आ जाएगा. Now, how can I find this shaded region? How can I find this shaded region? इसके लिए हम क्या कर सकता हूँ? I can find the area of this big triangle. जो बड़ी वाली big rectangle, ये पूरा rectangle निकाल सकते हैं, right? That's easy. उसमें से माइनस कर दें area under the curve from 0 to 2 pi. 0 से 2 pi तक ये area under curve माइनस कर दें, तो वो दरमियान वाला आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा. ठीक है? टोटल रेक्टेंगल में से आप ये येलो वाला, आप ये एरिया अंडर कर्व माइनस कर देंगे तो वो येलो पार्ट आपका पूरा आ जाएगा. ओके, तो ये हम करते हैं. So what I'm going to do now is I'm going to find area B, but for that what I'm doing is I'm using 0 to 2 pi this whole range first of all. इससे मेरे पास वो टोटल रीजन आएगा पहले, एरिया ए प्लस एरिया बी. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनफैक्ट एरिया ए प्लस बी. पर पूरा एरिया निकालना चाह रहा हूँ अभी. दैट्स इजियर. उसमें से हम ए माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा. सो 0 से 2 पाई हमारे लिमिट्स है. तो हम पहले क्या करते हैं, रेक्टेंगल निकाल लेते हैं. रेक्टेंगल के एरिया कैसे आएगा? बेस इनटू हाइट एज बिफोर, राइट? व्हाट्स द बेस? Base of this big rectangle. This is the rectangle that I'm talking about. इसकी base is 2 pi, height is 2 units, right? अगर ये 1 है और आपको पता है एक cos का ग्राफ है, एम्पलीट्यूड 1 होता है, तो 1 और 1 ये टोटल 2 हो जाएगा. तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा? 2 multiplied by 2 pi, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है. So this area is 2 into 2 pi, which is 4 pi. ठीक है.
और इसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं. Okay, sorry about this. I need to correct my charger as well. So I'll do that after this question. Area under curve from 0 to 2 pi. अब देखिए इसकी काफी वर्किंग हमने पहले ऊपर कर ली हुई है, हमने इंटीग्रेशन वगैरह कर लिया ऊपर, तो हम डायरेक्टली वो यूज कर लेते हैं. इंटीग्रेशन करके हमारे पास आ गया था x प्लस साइन एक्स, राइट. इनफैक्ट वो तो एक सिंगल स्टेप ही था, बट लेट्स जस्ट राइट दैट डायरेक्टली. x प्लस साइन एक्स हमारे पास आ गया था इंटीग्रेट करके. अब लिमिट्स कर डालनी है वहां पे, 0 से लेकर 2 पाई डाल देनी है. इससे क्या आता है, 2 पाई प्लस साइन ऑफ 2 पाई subtract from this 0 plus sine of 0. What does that give us? 2 pi plus sine of 2 pi. Sine of 2 pi क्या होता है? Sine of 2 pi is 0 और sine of 0 भी 0 होता है. So everything becomes 0 here and you're left with 2 pi. That's the area under the curve from 0 to 2 pi. तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिल जाएगा एरिया A प्लस एरिया B. व्हाट इज दैट? रेक्टेंगल में से माइनस कर दें एरिया अंडर कर्व फॉर दिस होल रीजन फ्रॉम 0 to 2 pi. रेक्टेंगल में से वो वाला एरिया माइनस कर दें. So what is that going to be? 4 pi minus 2 pi, right? And that gives me 2 pi. That is the area A plus B. ठीक हो गया. तो अब मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं. लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन हियर. एरिया A प्लस B दैट इज इक्वल टू 2 पाई. इससे पहले मैंने ये भी निकाल लिया हुआ था कि एरिया A कितना आता है. एरिया A was 2, so एरिया A is equal to 2. What about एरिया B? वो क्या हो जाएगा? A प्लस B जो था 2 पाई, उसमें से माइनस कर दें A. That's 2 पाई minus 2. ठीक है. अब रेशो क्या गिवन थी? रेशो उसने दी हुई थी एरिया A ओवर एरिया B. एरिया A over area B is equal to 1 over K. Let's use that ratio now. Just input values. A क्या है? 2. B is 2 pi minus 2. Sorry, 1 over K था राइट साइड पे. राइट में मेरे पास आ गया 1 over K. यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी. K को लेफ्ट पे ले जाए और राइट साइड पे ये बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. राइट साइड पे क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस 2 over 2. या फिर रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइड्स के ऊपर, एक ही बात है. अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं. K की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास? पाई माइनस 1 एंड दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. Okay, that was a 9-mark question. The value of K here turns out to be pi minus 1. That is what we wanted to find here. Okay, I hope that makes sense. Yes, Nizam, that was a slightly more difficult one, but that's how you would approach it. ये आपने split कर लिया different parts में. Area A find कर लिया पहले, फिर आपने area A plus B total find किया और उसको यूज करके फिर आपने area B निकाला और जो रेशियो उसने दी हुई थी उससे आपके पास फिर K की वैल्यू आ गई. ठीक है, that's what we had to do here. That was question number 11. Now, question number 12 is the last one that we're going to do after this. Let me just connect my charger. In the meantime, let me just remind you, you can find a lot of other helpful content in the description below as well. For your art maths paper, you can find difficult questions from November 2022 papers. You can also find the difficult questions from the other June 2022 papers, along with almost the complete syllabus recordings. Uski playlist bhi aapko niche mil jayegi. And there are some quick revision videos that a lot of students find extremely helpful before their exams. You can also have a look at that. Exams se pehle, these quick revision videos are extremely helpful. Okay, so we're done with these 4 questions from this paper. We're done with, in fact, 3 questions from this paper. We're done with question number 4, 6, and 11. Now let's move on to the last one that I want to do from this paper, and that's question number 12. Let's have a look at this. Question number 12, dekhte, and then we end this session. It says the curve is such that the second derivative of this curve is square root of x plus 1 divided by 4th root of x whole is pure ka square. Second derivative diya hua hai curve ka.
we are given that the gradient of the curve is 4/3 at the point 1 and -1. We need to find the equation of the curve. ओके, सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है और उससे आपने क्या पूछा है, उसने आपसे पूछी है कर्व की इक्वेशन. अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव से आप कर्व पे कैसे जा सकते हैं. आपको पहले एक दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा. एक दफा इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू dy/dx. फिर दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, उससे क्या मिलेगा आपको, उससे आपको मिलेगा y. 2 दफा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. And remember, whenever we integrate, we have a plus c as well. तो दोनों steps के अंदर आपको c की value भी figure out करनी पड़ेगी. ठीक है, so how do we do this? Let's start with this integration process. We are given the second derivative of y, which is square root of x plus 1 over 4th root of x और इस पूरे का whole square. Yes, हम power form में लिख लेते हैं. That's actually better when we are differentiating or integrating. It becomes easier to understand. 4th root का मतलब है 1/4 और square root का मतलब है 1/2. Yeah, that's the second derivative that we're given. Now, how do we integrate it? अब देखें, इसमें power rule नहीं लग सकता because जो अंदर वाला part है ना, this is not linear. जब linear नहीं होता तो power rule नहीं लग सकता. तो हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. स्क्वायर को एक्सपैंड करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे इसको क्या करें. लेट्स एक्सपैंड द स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल. न्यूमरेटर को अगर हम एक्सपैंड करते हैं, x raised to power 1/2, so a plus b का होल स्क्वायर. सो x raised to power 1/2 का स्क्वायर वो क्या आएगा, x raised to power 1/2 into 2, that's x raised to power 1, right? Plus 2 into x raised to power 1/2 plus 1 ka square, that's just 1. And then denominator, we're going to have x raised to power 1/4 ka square, which is x raised to power 1/2. हमने square evaluate कर लिया. Now we still can't integrate it. It's a fraction, right? इसको integrate करना हमें नहीं आता. But there's a trick we can use here. What we can do is we can say, let's split this fraction like this. के first term अलग से लिख लें, x over x raised to power 1/2. Second term अलग से लिख लें और ये third term अलग से लिख लें. We can split this fraction so that the second derivative becomes like this: x over x raised to power 1/2. What is that going to be? X raised to power 1/2 plus 2x raised to power 1/2 divided by x raised to power 1/2. That's just 2. And then we have plus 1 over x raised to power 1/2. We can write that as x raised to power minus 1/2. This is what the second derivative here becomes. Now we integrate it. And that is going to give us dy over dx. X raised to power 1/2 की integration क्या होगी? Power में 1 add कर दिया और उस new power से divide कर दिया. 3/2 से आपने divide कर दिया. Plus, what's the integral of 2? 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 2 times x. X raised to power minus 1/2 की integration, you add 1 to it. 1 minus 1/2 plus 1, that is going to give you 1/2. Divide by that new power, that is 1/2. But remember, whenever we integrate, we have a plus c there. तो यहाँ पे आपके पास plus c भी आ रहा होगा. ठीक है. Now let's simplify this before we try to find the value of c. We have 2x raised to power 3/2. Remember, ये 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 3 आ गया. Plus 2x, again this 2 goes to the numerator. We have 2x raised to power 1/2 here plus c. And now we need to find the value of c somehow. इसके लिए उसने क्वेश्चन में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है. Let's see if we can use that. We are given that the gradient of the curve is 4/3 at the point 1 minus 1. इसका मतलब क्या है? Gradient क्या होता है? Gradient कहाँ से आता है? Derivative से, right? So dy over dx की वैल्यू उसने दी हुई है कि वो 4/3 है when x equals 1 and y equals -1. ये हम यूज कर सकते हैं c की वैल्यू फिगर आउट करने के लिए. तो क्या करें? dy over dx is 4/3. ये आप यहाँ पे इनपुट कर दें और x की वैल्यू 1 है, ये आप यहाँ पे इनपुट कर दें, उससे c आ जाएगा. So let's write that down here. We say let's input x equals 1 and dy over dx equal to 4/3. That's the information that we were given in the question. We use that information to find the value of c here.
ठीक है, let's put that here. dy by dx क्या आ गया? 4/3. That equals 2 into 1 raised to the power 3/2. That's just 1 divided by 3 plus 2 into 1 plus 2 into 1 raised to the power 1/2 plus c. Let's simplify this, and that gives us 4/3 plus 2/3 plus 2 plus 2 plus c. यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. इनफैक्ट यहाँ पे इक्वल टू का साइन था दरम्यान में. You can do this on your calculator and see what that gives you. 4/3 minus 2/3 minus 4, and that's giving me minus 10/3. This is the value of c that I'm getting from this. तो अब क्या हुआ? मेरे पास dy by dx आ गया. ठीक है, dy by dx क्या हो गया? It's 2x raised to the power 3/2. यहाँ से आ रहा है, remember? 2x raised to the power 3/2 divided by 3 plus 2x plus 2x raised to the power 1/2 minus 10/3. This is our dy over dx. Okay, so this is done. Now we needed the equation of the curve. तो दोबारा से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो एक दफा और इंटीग्रेट करते हैं हम इसको. ठीक है. Now how does that work? 2/3 जो कांस्टेंट है वो तो वैसे ही रहेगा. x raised to power 3/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? Add 1 to the power, it becomes x power 5/2. Divide by that new power, 5/2 से divide कर दिया. x का integral is x squared over 2, and then you have x raised to power 1/2. उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 3/2 divided by 3/2, and then minus 10/3 is a constant. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसके साथ आप x लगा देंगे, and then you have plus c after this as well. Again, you can use c here if you want, or या कोई और आप different letter use कर लें तो वो भी ठीक है. इसको आप c2 लिख लें, और use another letter, that's okay. ये भी कर लेंगे तो इतना मसला नहीं है. This is what you're getting here as your equation. Now let's simplify this. ये 2 पर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होएगा. आपके पास क्या आ गया? 4/15, right? 3 into 5 is 15. So you have 4/15 into x raised to the power 5/2. Y equals this plus x squared, because 2 and 2 here get cancelled. Then again, this 2 goes to the numerator. It becomes 4/3 into x raised to the power 3/2 minus 10/3 times x plus c2. अब क्या करें? अब हमें दोबारा से वो पॉइंट यूज करना है. ये उसने दिया हुआ है x की वैल्यू 1 है, जब y की वैल्यू -1 है. ये इनपुट कर दें इसके अंदर. वी से लेट्स इनपुट x equals 1 and y equals -1 and see what that gives us. y की जगह पे -1 डाल दिया, x की जगह पे 1 डाल दिया. So you have 4/15 into 1 raised to the power 5/2. That's just 1 plus 1 squared plus 4/3 into 1 raised to the power 3/2 minus 10/3 into 1 plus c2. यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी. ये आप देखें आपके पास क्या आती है. On the left side you have -1, so you have -1 minus 4 divided by 15 minus 1 minus 4 divided by 3 plus 10 divided by 3, and that is giving me -4/15. This is the value of this constant that I'm getting, and that is going to give us the finite curve. ये आपने curve ऊपर निकाली थी, curve की equation, उसने आप c डाल दें. So it becomes 4/15 into x raised to the power 5/2 plus x squared plus 4/3 into x raised to the power 3/2 minus 10x/3, and then finally you have -4/15 here. So that's the equation of the curve that we were looking for, and that's our final answer here. आपके पास ये equation of curve आ गई, which is what we were looking for here. Okay, I hope that makes sense. These were the more difficult questions from this paper, June 2022, paper 2, variant 2. I hope that was helpful. If you found this helpful, make sure that you press the like button here.
And you can also find a lot of other helpful content in the description below. You can share this with others as well if you think your friends might find this content useful as well. I'll be doing the difficult questions from more papers tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.